Hello. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. And yes, यार राइवलरी वीक है। बहुत बड़ा राइवलरी होने वाला है वापस से और इसीलिए मैं लाया हूँ एक स्पेशल गेस्ट अगेन बैक बहुत दिनों बाद में। अंशुमान भाई, वेलकम टू द हाउस। हाउ आर यू? I'm absolutely fine, Bhaiya. How are you? It's good to be out here after a long time. To be very honest, good to be back on YouTube after a long time. So, नहीं मतलब always good to have Anshuman क्योंकि we get a different perspective altogether. Anshuman is like whatever he feels he really talks and that's why I love the best about Anshuman. लेकिन again people जो भी join कर रहा है normal drill है, like कर दीजिए stream so that we have a lot more people joining. Do not forget एक poll भी है, very interesting poll, so do take that poll. लेकिन हाँ, the most important thing like we are having, yes of course, yeah, we didn't have a great week, both of us actually United and Chelsea didn't have a great week. For a lot of reasons, United have big news, which is maybe exciting news for Anshuman and all United fans. हम कल डिस्कस किए थे और अंशुमन से भी लेके पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी बिग अप सिटी हब इन द हाउस. यस, रोज लाइव स्ट्रीम कैसे कर लेते हो भैया? पैशन नथिंग एल्स. वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स. यार मौका चाहिए हमें तो स्पोर्ट्स के बारे में बात करने का और स्पेशली फुटबॉल. एंड यस, ऋतिकेश इन द हाउस. हेलो एवरीवन एंड हेलो टू रिवाज ऑलवेज चेल्सी फैन. यार यस, चेल्सी वेस्ट हैम है, लिवरपूल एवर्टन. हाँ, टेक्निकली इट्स मर्सीसाइड डर्बी लेकिन हमें पता है लिवरपूल डोमिनेट करती है. बट आई थिंक इट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड अवे टू आर्सेनल जो हमें पहली थी. पेन्स मी टू से दैट, बट आई थिंक I have to start with one point here, Anshuman. As a Premier League fan from like last couple of decades, मतलब again, it's absolutely brilliant कि यार Premier League एक Hall of Fame लाई है. That is बहुत अच्छा. जब आया था, and I know that Lampard was there in the first set and a lot of other United players were there, you know it, right? लेकिन अभी जो आया है second set, I don't know man. मतलब there is kind of debate ही नहीं. It's almost controversial. आप मतलब एज अगेन वी आर नॉट अंडरमाइनिंग किसी का भी काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन टू प्रीमियर लीग. यहाँ पर लेट्स गेट इट राइट. पहले अगेन जो देख रहे हैं अगेन आप भी कमेंट करिए. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लेटेस्ट सेट ऑफ प्रीमियर लीग प्लेयर्स हु हैव बीन इंडक्टेड? ऑफ कोर्स नॉट डिनाइंग कि होने चाहिए, लेकिन टू गेट Vincent Company over a Terry, over a Vidic, over a Ferdinand, to get even as in Ian Wright, as much as he's been great, over an Andy Cole, Van Nistelrooy मैं तो बोलूँगा. Anshuman, what is your reaction, भाई? मतलब I know it doesn't affect you, but as in just what do you think about that? भैया हर बार की तरह when we see these awards, ठीक है, when we see these awards, we can talk about a contributor. ठीक है, किसी ने प्रीमियर लीग को अपने बहुत साल दिए हैं, ठीक है, पर्टिकुलर क्लब के लिए इम्पैक्ट डाला है, ठीक है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट द हॉल ऑफ फेम, यू शुड बी पुटिंग द नेम्स जिसके परफॉर्मेंसेस एंड ट्रॉफीज दोनों हैं. हाउ कैन यू नॉट पिक टेरी, फर्डिनैंड, विडिच, एंड हाउ कैन यू पिक फर्स्ट सेट में जेरार्ड का नाम था. कौन सा प्रीमियर लीग है उसके पास? एग्जैक्ट मतलब वो मतलब हम तो बोलते हैं यार एज चेल्सी एग्जांपल भैया बिफोर यू स्टार्ट एक और एग्जांपल. ऐसे तो फिर मार्क नोबल को दे दो यार, 2 साल में प्रीमियर लीग उसको हॉल ऑफ फेम में डाल दो, बिकॉज़ ही हैज प्लेड फॉर 19 इयर्स. वो वेस्ट हैम के साथ 19 साल ही हैज बीन लॉयल. लॉयल्टी के लिए अगर हॉल ऑफ फेम देना है तो उसको भी दे दो भाई, उसने बहुत कुछ किया वेस्ट हैम के लिए. या और मालूम है रूल्स भी बदल दिए. रूल्स भी क्या था मालूम है कि आपको मिनिमम यू हैव टू बी रिटायर्ड 1 year बिफोर. अभी अग्वेरो पता नहीं सॉफ्ट कॉर्नर है बिकॉज़ ऑफ व्हाटएवर हैपेंड. अगेन आई थॉट्स गो टू अग्वेरो, लेकिन भाई आप रूल्स कैसे बदल सकते हो ऑल ऑफ सडन? मतलब मैं वही बोल रहा हूं कि मतलब अगर सिर्फ आपको अगर अवार्ड देना है ऑन द बेसिक ऑफ टाइमलाइन, किसने 17 साल या 18 साल खेले हैं, तो फिर तो भाई नोबेल को भी दे दो. 2-3 और बंदे हैं जो उस कैटेगरी में आ जाएंगे, उसको भी दे दो. Because when you are choosing your Hall of Fame, you will obviously give it to the people who has won it. ठीक है, जो जीते हैं उनसे शुरुआत तो करो भाई. हाँ, तुम्हें बाद में देना है कंट्रीब्यूशन के लिए, you can give it. वो जो बोलते हैं ना क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा मैन में, उनको तुम एक ऑनरेबल मेंशन दे सकते हो, ठीक है. बट See that is what ना मतलब ये मतलब कहाँ एंड होता है. मतलब I know media में there are a lot of Liverpool maybe ex players were there. मतलब Ian Wright मैं भी जानता हूँ for Arsenal also, मतलब great player, again Arsenal fan in the house.
मैंने देखा यार ये अनराइटेड गेम, मतलब मे बी ही वाज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड आई वुड से, मतलब ऑनेस्टली मैं बोलूं तो, लेकिन भाई वो एक प्रीमियर लीग जीता है एंड आई थिंक आई एम अग्रीइंग विद अंशुमन हियर, द फैक्ट दैट नॉट ओनली एक होता है जीतना, एक होता है कंट्रीब्यूशन टू विनिंग दैट पर्टिकुलर लीग एंड अ सेट ऑफ लीग्स, व्हाट चेल्सी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव डन ओवर द लास्ट 30 years, I don't think any other club has done, and that's a reality. वो reality है, मतलब अभी dominate कर रही है सिटी, absolutely no two ways about it, and Arsenal had that time during the late 90s, right? लेकिन I think it's clear that when you talk about Premier League era, it is the two teams that we are having the parallel, or not because Anshuman यहाँ है, that is a fact. आप देखो facts, आप देखो Terry has got 5 as in trophies there, और वो ही नहीं, he captained man, हर के लिए वो captain था, और Vidic is there, Terry is there. उसके पहले if you are giving the likes of companies like a joke, ये literally तुम उनके contribution का मजाक उड़ा रहे हो. Let rivalry aside, ठीक है, अगर हम facts के ऊपर सिर्फ बात करें, सिर्फ facts के ऊपर, तो ऐसे तो भाई जोन्स, मैं आई वोंट बी सरप्राइज अगर एक दिन में फिल जोन्स को डाल देंगे भाई. उसके पास भी प्रीमियर लीग है. आई वोंट बी सरप्राइज कि कुछ दिन बाद हमें फिल जोन्स दिख जाए हॉल ऑफ फेम में फॉर कंप्लीटिंग 10 years at United. मतलब भुगता है ना, just to kind of take it with him, and again even talking about Maguire, again I won't be surprised with him either. Again thoughts go to Maguire and we spoke about it yesterday, lekin the fact being, that's it. But again moving over, Gilberto Silva as player opinion, well, मतलब बंदा बहुत, मतलब in the invincible side he was there, he was one of the poles, lekin again I would not call him a Premier League all time legend, what I mean, Patel, as in don't get it wrong, but again हमको होप, the thing is, people very time take the legend word very lightly. ठीक है, good players, great players, legendary players, we have 3 categories. Correct. You cannot just keep on calling everyone a legend. Even when you read Fergie's autobiography, he said he managed just 4 world class talents. So just because Neville was in the class of 1992 doesn't make him a legendary player. He's a club legend. He had his moments, he was a great player, until his injury. But was he on par with talents of Giggs or Scholes or Beckham in that manner? No, he was not. He was hard worker. Right. So legendary people take the word very lightly. मतलब कुछ अगर अच्छा कर दिया legendary. Also एकदम. तो anyway, let's move on from that, because हाँ ये controversy तो मतलब is ever ending, and we'll I know, मतलब इस बार तो मतलब Ballon d'Or का भी अलग calendar year है, तो काफी discussion होने वाला है वहाँ पर. Sorry to interrupt you in between, but Ballon d'Or I literally laugh. It's the biggest joke on the planet in terms of awards. You call it as the best footballer award, where you give it to the player who scored an assist. What about the goalkeepers, the defenders? The last one who got it was Carvalho. Right. और मॉड्रिच को भी इसीलिए दे दिया क्योंकि he put his team to the World Cup final. Otherwise उसको भी नहीं देते. Yes. Then you rob Lewandowski of Ballon d'Or twice. एक साल तुमने कैंसिल कर दिया, अगले साल तुमने मेसी को दे दिया. वही है, वो कैनावाला वाला वापस एरा आने नहीं वाला है. बट अगेन मूविंग ऑन, अगेन पीपल जो भी ज्वाइन किया है, आई नो फ्यू पीपल ज्वाइन लेट, एज ऑलवेज let's like the stream, let's take that poll so that we have a lot of people. यार बहुत लोग पोल लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाता है, सब्सक्राइब करना भूल जाता है अगर नहीं किया तो. So do subscribe, do like, and lot of to us. चैनल सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल दबा लो तो ताकि अंकित भैया को मिस ना करो कभी. Absolutely, and yes, absolutely, Canberra is what we meant. Yes, great points then. But again, मतलब check out the United Road भी, काफी अच्छा content. I've been there a couple of times, and मतलब I love conversing with Anshuman. आप देख ही रहे हो. But I think talking about Manchester United, and we'll come to Chelsea, we'll come to the Merseyside derby as well. So do stick on. लेकिन हाँ, Arsenal versus Manchester United. Arsenal, what they did is a madness. आप बोलोगे Chelsea allowed them to do. 2 days back, मतलब I don't know, Anshuman, if you got a chance to look at the match. I watched the game for the 90 minutes. Yeah, as in, again, maybe it's a time of the year where Arteta suddenly kind of saves his job, and that's what he's been doing, and that's the reality of it. And the young players are kind of coming to the fore. So are you kind of are you in that mode कि यार जो Manchester United में हुआ है last 48 hours में with Ronaldo, obviously he's coming back, but the fact that that kind of wasn't great news. Maguire के साथ जो हुआ है, Ten Hag जो है, so it's kind of
positive and negative. Rangnick, I don't know, वो कैसे dressing room को संभालेगा. So where are you seeing this? Arsenal are on high. So generally क्या है मतलब feel in Manchester United for this game? After all, it's Arsenal भैया. मैं तो यही बोलता हूँ, ठीक है. They are capable of doing wonders. I have said that before. मुझे Arsenal praise करने में कोई ऐसा नहीं है कि I don't like them, obviously. As rivals, I don't like them. But then, they are capable of doing wonders. Yeah. And next week, they will be back to doing the basics. So, last time when I was on this channel, I said, जब तक उनके पास Xhaka है, तब तक as a United fan, I feel very, very optimistic. होप है बेसिकली नहीं, लेकिन वो उसने किया था भाई, वो नटमेग किया था चेल्सी के 2 प्लेयर्स को. मैं वही बोल रहा हूँ कि that's what they are all about. कि उनके पास वो स्किल है, they can play absolutely mind-boggling brand of football. ठीक है, और उसी गेम में they will end up conceding 2 absolutely clown goals. तो ये चीज, I am not saying United अभी उनसे better है, United का फॉर्म better है. We are, one of the most consistent teams in terms of losing and drawing the games throughout the Premier League. ठीक है, but then it's Arsenal. मैं वही बोल रहा हूँ कि at home, and with Ronaldo back, I do feel that our players have basically given up on this season. Yeah. I won't be surprised if we lose the game, to be honest. Wow. I won't be surprised. But then I won't be surprised either if we go and just hit them for 3 more. Last time it happened, at 3-2 हुआ था, right? 3-2 हुआ था, if I'm not wrong. They came in the game, very high on form and everything, and we were absolutely shattered at that point of time, and we still ended up beating them. And since then, they don't have Partey now, they don't have Tierney now. Yeah. They don't have. Despite we know that Tavares, again, is a huge problem for them. I think unka right back with Tomiyasu, I'm not sure if he's fit. So that is another thing. Yeah. So I think again we allowed Ben White to play there as much as Werner was lethal उस game में, लेकिन मुझे लगता है for you it is a great chance to come back to the top 4 frame proper. Not that you're already, मेरे ख्याल से है chance, लेकिन I'm surprised you are saying that the players, I know like Chelsea as well, आप बोल सकते हो कि motivation level थोड़ा कम है clearly, and that's the problem, the mentality issue is there. लेकिन Ten Hag अब हुआ है just announced formally, surely यार Ten Hag बात किया होगा कुछ players के साथ नहीं already, and don't you think I am expecting Ankit bhai at least 10 players to leave in this summer. Like Rangnick said. Yeah, 10. No, he wanted 10 signings, but I see at least 7 to 10 players leaving this club, and I'm absolutely ecstatic about it. Let's name it. Whom all are you naming? Pogba is gone. Okay. Pogba is gone. I think one second. So Pogba is injured, for people watching, fantasy managers especially. I think Pogba is potentially done for the season. So potentially last game of United. As a United player as well, and you can man. I absolutely love it. Absolutely love it. No hate for Pogba, but I think it's that point of time where he moves on. Get somewhere else. He can definitely have a great time over there, but thankfully he's going out of United. I'm not going to say that he is a pathetic player or something. He has his moments. He is a talented player, but he never showed up for United on a regular basis. So, ठीक है, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. So Pogba is going for me definitely. I'm just talking about the players I think who's leaving. Matic he is retiring at the end of the season. मतलब United से he's leaving. So Matic is gone, Lingard is gone, Pogba is gone, Mata is gone. 4 हो गए. Bailey और Jones. Most probably they are all. Sorry, मैं पूछना चाहूंगा, जोन्स का तो हमें सब पता है यार, मतलब he has been kind of, I don't know, for some reason is there, क्योंकि उसको क्लब नहीं मिला और he didn't want to go, he wanted to earn. लेकिन एरिक भाई का क्या है भाई, जोसे मोरिन्हो के अंडर he was one of the best. I am like लास्ट 2 वीडियो में बात कर रहा हूँ उसके बारे में, कहाँ मतलब he is behind Phil Jones, ऐसा क्या हो गया? इंजरी, मेंटालिटी, ये 2 चीजें अगर आपके अगेंस्ट है भैया तो you cannot succeed. ठीक है, तुम बातें करो, तुम सोशल मीडिया पे आके डांस कर लो, वो अलग की चीज है, बट इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग वीक इन वीक आउट, तुम भाई 5 हफ्ते रेगुलर फिट नहीं हो सकते यार, तुम ऐसे प्लेयर हो, राइट? ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई सेड दैट आई सी दीस 2 लिविंग.
I won't be surprised if we sell Henderson, but Henderson का total depend करता है Erik Ten Hag पे. Yep. You know, the way he wants to play, Henderson is the perfect fit. Perfect fit, हाँ. ठीक है, डेगिया आते के साथ मेरे ख्याल से वो बेंच करेगा. And that's why there was talks of, you know, new contract been given to Degia, but now it's on hold. Oh wow, that's a big thing. Again, United fans and now आप comment करिए भाई. मतलब I know I'm seeing मतलब महानता ने बोला है, you know, he would just like to see 3 players. That's what he predicts. And yes, big up to Michael Talks Football 8744. Thanks guys, fellow content creators. Always good to have you. And big week for Liverpool as well, Michael. I know every week is a big week, but yeah, it's I think a Merseyside derby, probably 3 points in the bag, you would say. View from the stands, also big up. Aston Villa fan, big one at that. Great content creator. Donny van de Beek will shine under ETH. हाँ, मतलब इस पर आ जाते हैं यार. मतलब हमारी चर्चा हुई है इसके बारे में आपके चैनल पे, अंशुमन. मतलब अगेन आई एम ऑफ द ओपिनियन कि यार यू नीड अ प्रॉपर न्यू मिडफील्ड, क्योंकि वो मिडफील्ड प्रॉब्लम है. Fred is not a DM, you know, you need that. लेकिन अगर आता Donny van de Beek comes, probably chance तो मिलेगा, but do you see him as a starter? Absolutely. अरे भाई वो तो फैन हो यार, दोनों ही फैन है. हम तो बोलेंगे. Donny van de Beek is walking into this United 11. Ballon d'Or nominee था previously. हाँ, मतलब literally he will walk, he will jump. Just give him a guy who can just sit back and hold. Right now we are, you know, getting in talks with Bissouma. Bissouma is there. We are monitoring Tukemeni. So if we get that guy, you know, and we let Donny and Bruno do their work up front, I will just sit back and relax. Because जो दोनों की quality है on the ball, ठीक है, the runs that Bruno and Donny can make, उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो पीछे उनको ये ना सोचने दे कि भाई तुम्हें पीछे जाके बॉल लेनी है. हाँ, that is the main thing. That's the main problem. वही है, चेल्सी में भी प्रॉब्लम हो रही है. तुम्हारे अगर क्रिएटिव प्लेयर हैं, they will lose the ball. Correct. Simple as that. But then तुम्हारे, you know, that's why I love Kante. क्योंकि वो किसी को ये नहीं सोचने देता भाई क्रिएटिव प्लेयर को कि तू बॉल लूज कर रहा है तो तुझे पीछे आना है. He will cover the entire grass. कोई टेंशन ही नहीं है उसको. Yeah, but you know what? As an interesting comment here, quickly I'll take it, because is Donny actually that good? We haven't seen him play enough to form a true opinion of him in the EPL. Like, I understand from where you're coming, but the problem is in the United space, under Ten Hag, especially previously, he was a Ballon d'Or nominee. That's the reality. So maybe the way Ten Hag plays, and that is what, like Anshuman explained, he needs to be given that space. He's not your typical DM. He's not your typical number 8. He's somewhere between the two. So I will also respond to him. A view from the stands. You know, I don't know your name, but the thing is, first of all, when he came in, he was advised to bulk up, because obviously coming from Eredivisie to Premier League, he was advised to bulk up, and he did that. Look at Donny when he arrived, and look at Donny now. You know, the problem that happened with him at this club was he was not given at least the chance to express. People are like, you know, he has not shown enough. How can a guy show enough when he's not even getting a run of 10 games? What do you expect from that guy? You know, that guy plays 90 minutes in like 6 months and people expect a 10 out of 10. How is that going to happen? You know, when we have players with such technicality, you know, which Donny van de Beek possesses, the problem of performance won't be there. It's all about having a good phase, you know, getting integrated into the team. So that's why I said, Donny, Bruno, we just need that guy who will just sit back and let them do their work. Yeah, and again, like, you know, football critics, I understand. Again, view from the stands as well. I totally understand from where you guys are coming. But see, the thing is, it doesn't matter. Like, I know it matters to some extent. Any sportsman, like what kind of form they are in, especially in football, in the EPL, that confidence level चाहिए. Lekin with Ten Hag, automatically it's going to be a new start, and that's what United probably need. They need a reset, just like I think, like हमने कल discuss किया था, a lot of changes even Chelsea need. I believe, like, again, contrary to popular opinion, I think काफी changes चाहिए for us to get to that next level. भैया एक चीज, you saw the post by Rudiger's agent. क्या चीज नहीं मिस कर दिया शायद. He posted the photo of Fergie and he was like, you know, time to make some dreams come true. अरे भाई
Please, that's never happening. That's never happening, right? Absolutely. Yes. I Good won't about I won't be surprised, to be honest. सच बोलूं, I won't be surprised if Rudiger ends up at Old Trafford in the summer. नहीं यार, चैंपियंस लीग फुटबॉल चाहिए यार, फिर तो यू नीड मैं रूडिगर. बता रहा हूँ, at this point of time, all he wants is money. Simple as that. I am not saying Rudiger को प्यार है यूनाइटेड से, वो नहीं है, ठीक है, प्यार व्यार वाला सीन नहीं है. All he wants at this point of time is money, and we are capable of giving that because हमारे जितने बंदे निकल के जा रहे हैं, we are saving at least 45 million in wages. Imagine, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, यू नो, अब गाय लाइक पॉग्बा हु वाज हियर फॉर 290, ठीक है, टिकट क्या मांग रहा है, 200,000. वो बोल रहा है इतने दो वरना मैं साइन नहीं करूंगा. चेल्सी बोल रही है 150 से ज्यादा नहीं देंगे. हम ऐसा क्लब है जो हमसे अगर कोई 200,000 मांगता है, हम बोलते हैं काम कर भाई, 225 ले, ठीक है. वेजेस का प्रॉब्लम नहीं है हमारे साथ. हमारे साथ प्रॉब्लम है कि जो भी बंदा यहाँ आता है, या तो हम उसको टाइम नहीं देते, या तो उससे हम एक्सपेक्ट इतना कर लेते हैं कि यू नो eventually. So with Bailey going, most probably, you know, we might even see Lindelof. So I won't be surprised, but I do feel at this point of time Real Madrid is the favorite. You know, he is not going to be a Chelsea player at the end of the season. I am 100% sure. Oh man, pains me to hear that. Like, you know, maybe that's the truth. Let's see. Like, ownership में कुछ आ जाए. Like again, latest news people out there. मतलब आज again, you know, Andreas, my good friend, who's a good, you know, very good journalist as well, a tier 2 journalist for Chelsea. So he has said clearly, here the favorite right now is Todd Boehly's consortium, और उनका first priority is about Rudiger. So for me, by the end of this month, you know, both the things might be clear. Hopefully by the beginning of next month max, right? Yes, hello to Indian Football Talk. CDM कौन आएगा भाई? United में CDM again, like I think you know, our friend said, the fact is Germany is an option, but is he or John Obi Mikel kind of player already? He can get to that, but बहुत सारे clubs हैं who are after him, including a Real Madrid. So it depends on what एक I think domino effect आएगा. It depends on really lot of player transfers होने वाले इस summer में, and we'll be covering everything. So yes, again do like, subscribe and check out both our channels because yes, हम काफी कवर करने वाले इन नेक्स्ट डेज, स्पेशली ट्रांसफर, राइट. रूडिगर टू बार्सिलोना सीम स्पाइसी यार. बार्सिलोना यार, दे वॉन द एंटायर वर्ल्ड. अभी रैशफोर्ड का बार्सा का आज आया वापस. तो क्या लगता है रैशफोर्ड को, क्या लगता है भाई, मतलब इन टर्म्स ऑफ द वे ही प्लेज? आई नो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आर्सेनल गेम. He is totally going to, you know, nail next season. मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे मेरे पे लोग हंस सकते हैं, you know, they can laugh at me, but I have said that when a phase comes, you know, जहाँ पे पूरी टीम डाउन हो, इट्स वेरी इजी टू स्केपगोट वन गाय, ठीक है. इंजरी से आई एम नॉट गोइंग टू से, यू नो, कीप अ ब्लाइंड और मैं बोलूं कि अरे रैशफोर्ड, यू नो, ये चीज है. पहले 2 महीने इंजरी एंड ऑल, आफ्टर दैट ही डिडंट शो अप, यू नो. एक सीजन वैसा था जहाँ पे एवरीथिंग हैज गॉन डाउन, ठीक है. ऑप्टिमिज्म ये है ना कि व्हेन अ मैनेजर ऑफ दैट कैलिबर कम्स इन, इट्स आइदर हिज वे और हाईवे. यस, ठीक है. तो रैशफोर्ड को पता है कि अगर नहीं परफॉर्म कर रहा, ही इज गेटिंग सोल्ड नेक्स्ट सीजन. लेकिन क्या टेन हाग उस टाइप है? लाइक अगेन जस्ट टू काइंड ऑफ, बिकॉज़ मैं डच फुटबॉल काफी फॉलो करता, लाइक यू नो, राइट. टेन हाग इज मोर लाइक, ही इज नॉट योर, मतलब वो डिक्टेटर टाइप मैनेजर नहीं है. ही इज द पर्सन हु इज काइंड ऑफ, यू नो, एज इन ही विल जेल द पीपल. ही इज मोर लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन. ही इज नॉट अ वैंगार्ड despite being Dutch, you know, he's very different to being. That's why I said I'm optimistic about Rashford. अगर कोई वैन हाल जैसा होता ना, तो वो अभी मैं 100% श्योर था कि वो जा चुका होता. Okay, I get it. नहीं आप समझ में आ रहा है. Because you know, when you have a attacking manager और जिसको पता है कि भाई, you know, when you look at the likes of players he is making, ठीक है, he met Donny van de Beek, एंटनी अभी लेके आया, him, you know, ब्राजील से बेटर उसके स्टैट्स अभी एडिविज़न और चैंपियंस लीग में, you know, he met that guy, ठीक है. नेरेस का एग्जांपल ले लो, टैडिच का एग्जांपल ले लो, यू नो, दीज गाइस बेसिकली आर क्रिएटेड, यू नो, लाइक हाथों से बनाया हुआ है टेन हाग के. एंड व्हेन ही कैन मेक समवन लाइक टैडिच, आई एम जस्ट, यू नो, गेट गूज़बम्प्स व्हेन आई थिंक व्हाट ही कैन डू विद समवन लाइक सांचो, समवन लाइक हेलांगा, समवन लाइक मेजब्री, समवन लाइक रैशफोर्ड, समवन लाइक, यू नो, अमाद. सो मेनी टैलेंट्स एट डिस्पोजल, यू नो. वी टॉक अबाउट गार्नर, you know, so नाम आते जा रहे हैं. Now it's all about making sure that, you know, you make those players stick. End of the day वही आ जाएगा. ये tolerate नहीं करने वाला.
he is not going to save the place, he is not going to tolerate anyone कि मतलब वो आके कुछ भी बोले, वो अपना कंसोर्टियम बनाने में लगे. That's why I'm happy that someone like Pogba is going. I was one of those guys who absolutely bashed Mourinho when he called Pogba virus, and not for calling Pogba virus. I bashed him because he called it out in public. When you are trying to manage a team, तुम ये नहीं कर सकते कि भाई तुम जाके तुम सबकी ऐसी तैसी करो. अरे उसका ढंग ही ऐसा है, लूक शॉ का भी किया था ना, और काफी पास्ट टाइम अब्राहम को किया है. अंकित भाई, whatever he did, वो गलत नहीं था. उसके अगर पॉइंट्स देखो, he said, जो ये है ड्रेसिंग रूम है, इट्स डिवाइडेड. देख लो, ड्रेसिंग रूम डिवाइडेड है, ठीक है. प्लेयर्स को वायरस निकल गया ना, वायरस पता चल गया सबको. बट वही है कि जब वे ही टॉक्स, वो उस तरीके से नहीं चल सकता. एरिक टेन हाग को भी जो पसंद नहीं आएगा, ही इज गोइंग आउट, ठीक है. एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट हियरिंग एनीथिंग अबाउट यूनाइटेड ऑफरिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट टू पॉग्बा, या यूनाइटेड ऑफरिंग ओवर द लाइन जाके कि पॉग्बा भाई तू रुक जा, प्लीज रुक जा, ठीक है. क्योंकि एक मैसेज जा चुका है कि भाई ये बंदा नहीं चाहिए हमें, ठीक है. वो हमें टेंशन नहीं पालनी. बेसिकली इवन इफ यू आर कीपिंग पॉग्बा, तुम बेसिकली एक सीडीएम का जो है बजट यू आर स्पेंडिंग ऑन हिज एजेंट, दैट फैट मिनी रायोला. वो बैठा बैठा हब्शी खा जाएगा 30 मिलियन, उसमें हमें सीडीएम मिल जाएगा. ठीक है, एकदम ट्रू, 100%. 5 मिलियन में वी कैन हैव अ ग्रेट बैकअप इन टर्म्स ऑफ बसुमा. 60 से 65 मिलियन में वी कैन गेट समवन लाइक टुकेमेनी अगर वी डील प्रॉपर्ली. नाउ दैट, एंड वी आर आल्सो लुकिंग एट पॉल मिचेल, the Paul Mitchell or Laprician, they have already put up a report. He is looking a way back into Premier League, and United are optimistic of getting him. So they are, ठीक है. तो at this point of time, मैं एक चीज बोलूं मैं, पॉल मिचेल के लिए चेल्सी भी जा रही है, राइट? तो इट्स बेसिकली दैट इज द रूमर दैट इज बिटवीन चेल्सी एंड यूनाइटेड, दोनों में, बिकॉज़ वी आल्सो नीड एक डिपेंडिंग ऑन द ओनर्स ऑफ कोर्स, क्योंकि पेटर चेक इज नॉट योर डायरेक्टर लेवल, and Marina अगर जाते हैं. But again, quickly coming back to the comments, and we'll get back to the game conversation for sure. यार, चाइनीज सुपर लीग एंड इंडियन सुपर लीग मैं देना चाहूंगा अपना राय. लाइक द फैक्ट इज it is grassroots problem is MLS में, the way that again for a person who's actually watched the MLS live, मैं बोल रहा हूँ कि यार it is clear. I watched all the games. I will comment later. भैया आप complete कर लो, फिर I will tell. It is clear, yeah, the amount of passion. It is because of the fact that वहाँ पर from grassroots level, I can see even people who are kind of in the stadiums are having their families etc. kind of begin proper week in week out वाला football from like age of 6-7, and that is the difference. मे बी चाइना इंडिया में वो शुरू नहीं हुआ था, मे बी फ्यू इयर्स बिफोर. प्लस द फैक्ट दैट corruption, man, as in, let's be honest about it, the corruption especially in India is huge. That is something that needs to go, but eventually it'll come to fore. Obviously Indian Super League has changed a little bit. Players जो at the end of their careers might be coming to Indian Super League, but हाँ, MLS ज़्यादा prefer करते हैं because obviously एक होता है language, एक होता है just the people, so a lot of factors into it. लेकिन we are getting there hopefully. Like, but हाँ, Anshuman, please. Anshuman, what about you? What do you think? नहीं भैया, मेरे ख्याल से the biggest, as you said, grassroots. They came up with a plan जहाँ पे you won't be given the license to have your MLS club if you don't have the academy. तुम्हें academy से इतने बंदे उठाने हैं, ठीक है. And they never tried. Obviously, Beckham was there, then Gerrard went, now then Zlatan was there, now they are coming up with, but they never went out of the box. They never went like अच्छा Zlatan लाना है तो भाई 100 million दे दो. They never went into that zone जहाँ पे पैसा ही सब कुछ है, ठीक है. तो what they did, they formed their structure, and the city because America is massive, तो जो cities they chose जिनको उन्होंने MLS की franchise दी, they made sure जहाँ पे उनका थोड़ा sporting culture हो. Now LA, they have 2 teams, ठीक है. उनके पास basketball में भी 2 teams, ठीक. When you go to Minnesota, उनके पास उनकी हॉकी की टीम, उनके पास उनकी बेसबॉल की टीम, ठीक है. तो सब कुछ है. तो दैट्स हाउ दे सर्कुलेटेड फ्रेंचाइजेस. इंटर मियामी,
because of Beckham. They know how much the star power of Beckham is. तो वो उस तरीके से, as you said, corruption का तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता इंडिया और चाइना दोनों में, you know, and that's why ISL failed, because eventually they went in with so much money, ठीक है, वो कभी रिटर्न आना ही नहीं था. वो कहाँ से तुम रिटर्न ले लोगे यार? You are paying so much money, you are buying players from top European clubs, you know, और उसके बाद तुम उसको वेजेस दे रहे हो आउट ऑफ द वर्ल्ड. एट वन पॉइंट चाइना के अंदर 3 और 4 मोस्ट हाईएस्ट पेड प्लेयर्स थे, you know, they were getting paid, you know, they were getting paid more than the likes of Bale, for likes of Ronaldo. तो तुम उस तरीके से लेके जाओगे तो इट वाज बाउंड टू फेल. और इंडिया की तो बात ही मत करो यार. ये तो लेके भी आते हैं तो 36-37 साल के उठा के लाते हैं. वो एक साल में वो खुद लेके, वो एक साल भी नहीं खेल पाता. वो एक सीजन में भी वो आधे गेम्स इंजर्ड रहता है. तो ऐसे वही है ना, मतलब देयर हैज टू बी सम स्टार्ट, और वो स्टार्ट हो चुका है, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. लेकिन वो ट्रुथ है. लेकिन कमिंग बैक टू द कन्वर्सेशन पीपल अगेन यार, एवरीवन भाई क्या हो रहा है आज यार? लाइक्स नहीं बढ़ रहे. कम ऑन, लेट मी नॉट बी रेपिटेटिव लाइक रिकॉर्ड जैसे, ब्रोकन रिकॉर्ड जैसे. लेट्स गेट अप द लाइक्स पीपल. मतलब इट्स जस्ट अ प्रेस ऑफ अ बटन, डजंट टेक अ बक. आई डोंट वांट टू से दैट, लेकिन दैट्स अ फैक्ट, राइट? लेट्स गेट अप द लाइक्स, क्योंकि यार आप लोग देख रहे हो तो अच्छा लग रहा है स्ट्रीम, इसलिए देख रहे हो आप लोग. तो जो भी देख रहा है लाइक नहीं कर रहा है, कम ऑन, दैट्स नॉट डन. एंड डू चेक आउट यूनाइटेड रोड भी, press of a button. आप देख रहे हो काफी अच्छे conversation होते हैं. I'll be there, you know, lots, and Anshuman will be here as well. And we'll get to transfer talk और भी बहुत सारे questions हैं. मैं start कर रहा हूँ. I'll get to the end of the stream. Don't get disappointed, people. And you can always prioritize the super chat. लेकिन coming back to the game quickly, Arsenal Manchester United, like come on, it's a face off proper for the top 4. So मैं तो बोलूँगा good thing is, I think as per Rangnick's press conference, Varane, McTominay might be fit. मतलब ट्रेन की है, तो अगेन फिंगर्स क्रॉस फॉर यूनाइटेड से कि दे आर फिट. सो अस्यूमिंग दैट दे आर फिट, आई एम प्रॉब्ली प्रेडिक्टिंग दिस पर्टिकुलर 11. मैं शेयर करना चाहूंगा. अंशुमान प्लीज कमेंट, और पीपल इन द चैट, यूनाइटेड फैंस स्पेशली, आप बोलिए फॉर आर्सेनल द वे दे प्लेड, इज इट समथिंग दैट यू वुड गो विद? वैन बिसाका इज फेयर बिकॉज ऑफ जो पेस है आर्सेनल की, और डियोगो डालोट फॉर एग्जांपल, मैग्वायर नीड्स अ ब्रेक. व्हाट डू यू थिंक? I would have loved to go with, you know, Lindelof and Varane, to be honest. ये एक्चुअली प्रेडिक्टेड लेवल है. You're right. मतलब ये बेसिकली यही होना है, you know, होना यही है. मतलब I would have loved it if it was a bit different. मुझे फ्रंट फोर्स में obviously कुछ और चेंज नहीं कर सकते तुम. You have to go with, you know, Elanga at this point of time, the way he is playing. ठीक है. मिडफील्ड में भी don't have Fred, otherwise Fred और McTominay होते. तो अभी Fred नहीं है, तो अभी Teles obviously, Maguire की जगह I would have loved to see Lindelof, और Van Bissaka obviously, you know, because मुझे Lindelof इस गेम में इसलिए चाहिए था. When you look at Arsenal, ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जाके, you know, you just bully him. ठीक है. अब Ronaldo can go out and bully Gabriel, and he can bully the likes of Ben White. मतलब उसने एक लीप लेनी है और वो दोनों दिखाई भी नहीं देंगे. ठीक है. तो अभी आर्सेनल में वैसा बंदा नहीं है. और आर्सेनल में क्या है, डिफेंसिव पोजीशनिंग मैग्वायर की जो है इज वन ऑफ द वर्स्ट इन द लीग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. और मिडफील्डर सोच रहा है अपने आप को. हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि, you know, he is overdoing things just to make sure that, you know, he is not getting bashed up, and he is making mistakes after mistakes. So that's why I said Arsenal play with fluidity. तो हमें उसमें एक ऐसा बंदा चाहिए alongside Varane जो कि, you know, अपनी पोजीशन संभाल ले बस. You know, no nonsense defender है Lindelof at times. He has improved in that aspect, because पहले he used to try to, you know, just play around, कि मतलब पास निकाल लूं यहाँ से वहां, और he used to give away the balls. Now he's playing no nonsense mentality. अच्छा बॉल आ रही है, बंदा पीछे आ रहा है, मेरे भगाओ, ठीक है, बाहर मार दो, उसके बाद get into his defensive shape, और उसके बाद फिर वापस से खेलना चालू करो. So I would love to see Lindelof, but unfortunately Maguire को कैप्टन, तो वो कहीं नहीं जा रहा. United fans don't need to worry about Maguire if lack of threat starts front. Like again, like, you know, talking about Arsenal quickly, because हाँ उनकी बात करनी चाहिए यार. मतलब what they did, I wouldn't like talking about them, और याद नहीं करना चाहूँगा. लेकिन Nketiah भाई, मतलब the way he has come, and मतलब वही है, मतलब एक proper striker का instinct दिखाया. I know Chelsea let him do that, but I think Emil Smith Rowe, Bukayo Saka and Odegaard, मतलब they are really there. मतलब they are on their day. तीनों अगर क्लिक हो जाते हैं, that is their main kind of weapon. And along with that, I would also say that as much as हम बोलते हैं Xhaka, but Xhaka वही है, big games में either he does very well or he really does pathetic.
मतलब वो मिडिल ग्राउंड लगता ही नहीं. मैं वही बोल रहा हूँ कि that's the thing with United and Arsenal at this point of time. You never know what we are going to do. ठीक है, ये तीनों जो अभी टॉप 4 के लिए तीनों फाइट कर रही है, no one can say what they are going to do. ठीक है, Arsenal 3 losses. I was expecting them to lose against or even make a draw against Chelsea. Chelsea gifted them the game. Literally gifted them. ठीक है, और उसके बाद Spurs, they lost to us. They went on a run. उसके बाद फिर they जहाँ पे लगा कि they will go on, kick on, they again lost to Brighton. So अभी no one is that good. ठीक है, मतलब ये वही है कि तीनों भी ट्राई कर रहे हैं एक दूसरे को थोड़ा नीचे करने के लिए, बट एवरीवन इज फाल्टरिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो मुझे बस यही है कि आर्सेनल कैन टर्न अप बिग टाइम. Arsenal can turn up big time on their day. But then, as I said, since Ronaldo is coming back, I don't see United losing this game. But, as I said previously in the stream, that I won't be surprised if we lose. And I won't be surprised if we just go on and, kick Arsenal's ass as well. So that's the thing. And that's frustrating, it's frustrating because you are not sure about which team is going to, basically come on. True. मतलब अगेन मतलब अभी क्विकली अगर मैं टेबल देखूं तो यूनाइटेड आर व्हाट एट 54 पॉइंट विद 33 प्लेड एंड आर्सेनल 57 पॉइंट विद 32 प्लेड. सो इट्स लाइक अगर यूनाइटेड जीतती है आर्सेनल के साथ, इट विल बी अगेन प्रॉपर मतलब बराबर होगा. एंड इफ टॉटनहम काइंड ऑफ यू वुड होप दैट लूज, दे वुड लिटरली बी ऑन द सेम पॉइंट्स, which is quite possible knowing Tottenham as well. Lekin coming to the match itself, by the way, yes, United is Ronaldo is back for the United game. That's something that dekhe. Or by the way, Ronaldo did thank obviously the Anfield crowd, so that's something of a gesture that I'm pretty sure Anfield crowd did to him, which probably he also did not expect. But great to see that. That's something that हम चाहते is more of, because like हमारे चैनल भी बोलते हैं like we are a fan channel for all to see, and that's what I think. It's about the sport first. It's one sport and one love, and then kind of beyond that. Like hopefully we'll get there for Ronaldo again, of course, at Arsenal. Lekin quickly about the game, people. So United are unbeaten in the last 13 Premier League matches in London since the 2-0 defeat at Arsenal in January 2020. So again, ho sakta hai something's got to give. The last top flight side from outside the capital to boast a longer unbeaten run in London was Liverpool. And United won reverse fixture match 3-2 in December, ending a 6-match winless run against the Gunners in the Premier League. They are seeking first league double over them since 2017-18. और ये deja vu feeling हो रही है मेरे लिए, क्योंकि I literally said same stat about Chelsea 3 days ago, और हम सब पता है क्या हुआ against Arsenal. So I'm pretty sure United won't want that. That's what I'm saying. But I think Chelsea went into the game thinking that all right, it's just Arsenal. I don't know why they went with the defensive lineup that they went with. Made no sense. Made no sense, to be very honest. Even if you are not having Rudiger, you cannot just give up on Thiago Silva and start Reece James as your centre back. So उस चीज का तो मुझे कोई लॉजिक नहीं लगा. एक और पॉइंट यार, कमिंग बैक टू आर्सेनल, आई नो मतलब डिफरेंस इज एन इश्यू विद बोथ द साइड्स, लाइक चेल्सी, आर्सेनल, मैन यूनाइटेड आल्सो हैव बीन लीकिंग, राइट? लेकिन दे हैव बीन अनबीटन इन द लास्ट 3 प्रीमियर लीग होम मैचेस अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, कीपिंग अ क्लीन शीट ईच टाइम. So for I don't know whether it's playing at the Emirates or whatever. Ronaldo, no, don't worry. All they need is Ronaldo magic right now. Yes, absolutely. So again, let's move on to other games as well quickly. Before that, let's actually predict, and we'll come to a very interesting combined 11 towards the end of the stream as well, apart from the questions. तो बहुत लोग जो questions पूछ रहे हैं ना, हमने already बात कर चुका है मतलब in the stream, so hopefully you'll watch back. लेकिन काफी questions will take and a very interesting combined 11. So score predictions, just wearing a neutral hat, Anshuman. Score predictions, but to be very honest, I'm going with a 2-1 to United. 2-1 to United, okay. मैं यहाँ पर just because the unpredictable nature of Arsenal. Okay. Their defense is absolutely shambolic. And the way they won against Arsenal, against Chelsea, you can literally see 3 out of those 4 goals were gifted, not even gifted by the Chelsea defenders to Arsenal. So correct. But then we also have Maguire. That makes up for things. So
मतलब मैं वही देख रहा हूँ कि इतना वो चेल्सी आर्सेनल का गेम इतना कॉमिकल था ना, इट वाज लाइक अ स्कूल बॉय एरर काइंड ऑफ थिंग। पिंग पोंग चल रहा था बॉक्स के अंदर। मैं वही देखता हूँ, एग्जैक्टली वही देखता हूँ, सेम अगेन एज मच एज आर्सेनल अनप्रेडिक्टेबल है। मेरे ख्याल से जो मोटिवेशन है अभी फॉर आर्सेनल टू काइंड ऑफ डू दैट स्पेशली एट होम विद आर्टेटा हैविंग जस्ट वन गेम अ वीक, आई नो ये पहला वीक है फॉर मेनी वीक्स जहां पर दे हैव 2 गेम्स, लेकिन आई थिंक आई एम लुकिंग एट आर्सेनल नॉट लूजिंग दिस गेम एटलीस्ट, तो मैं जाऊंगा 2-1, विल बी हाई स्कोरिंग ड्रॉ, वेल एज इन न्यूट्रल आई वुड लव दैट। और I can also see Spurs losing on the other end. Like, you know, Spurs वो भी है. Maybe आप बोलोगे Spurs will come back, but I think that's something of a high possibility मेरे लिए. As much as, you know, I would want, मतलब I've gone on record saying Anshuman that I want Spurs to end in top 4 क्योंकि I don't see Harry Kane kind of, you know, sticking to Spurs. The moment Spurs नहीं होगी top 4 में, इस बार पक्का जाने वाला है, और मुझे लगता है for some strange reason it will be Man United. अगर you know, Spurs नहीं तो कहाँ जाएगा? नॉट अ चांस, कहीं नहीं जा रहा वो, उसको यार कोई नहीं लेकिन लेगा। आई एम सेइंग दिस लाउड एंड क्लियर, उसको कोई नहीं लेगा। चलो सिंपल सी बात है, स्पर्स हैड देयर मोमेंट जहां पे दे कुड हैव मेड 150 मिलियन ऑन अ गाय हु वांटेड टू लीव, जो 30 साल का होने वाला है, जिसके नीज के साथ और एंकल के साथ प्रॉब्लम्स हैं, एवरीवन नोज दैट। ठीक है, 150 मिलियन, उससे तुम पूरी की पूरी टीम खड़ी करते हो अपनी, ठीक है, एंड यू कुड हैव डन वंडर्स बिकॉज यू हैव अ मैनेजर लाइक कॉन्टे। आई एम नॉट सेइंग कि तुम केन को एक बिल्कुल केन जैसे प्लेयर के साथ रिप्लेस कर सकते हो, यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट एट लीस्ट यू वुड हैव सफिशिएंट फंड्स जहां पे तुम बहुत सारी चीजें डिफरेंट कर सकते थे। और अब कोई नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा कोई, बिकॉज स्टिल एक सीजन रहेगा उसके पास, और फिर से लेवी बोलेगा भाई 120 मिलियन चाहिए, कोई ना कोई शेट नहीं करेगा, तो कोई सेंस नहीं बनता। अगर इफ यूनाइटेड गोज फॉर समवन लाइक हैरी केन, फिर तो मुझे लग रहा है कि यू नो एड वुडवर्ड ही पीछे से सारे कॉल्स ले रहा है, ये रिचर्ड आर्नोल्ड बस शक्ल दिखाने के लिए है। नहीं, एडवर्ड का तो खैर हो गया अभी, लेकिन एनीवे दैट्स एक्चुअली अ गुड पॉइंट। लेकिन हाँ, कमिंग टू ऑफ कोर्स लिवरपूल का है मर्सीसाइड डर्बी, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, लिवरपूल जो मोटिवेशन है, जो टीम है, जो फॉर्म है, लैम्पार्ड, बर्नली यार बाय द वे जीत गई, बर्नली जीत गई। आई डोंट नो यार, वो शॉन डैश गया और वापस से जीत गई, मतलब शॉन डैश जाना है, अभी रहस्य अभी खुला नहीं है क्यों गया है, रियल जो ट्रुथ है कुछ और ही है मेरे ख्याल से। लेकिन एवर्टन यार भाई, अगर लैम्पार्ड को अगर चांस है ना लिवरपूल के साथ, जो भी दुश्मनी है उसकी पर्सनल जो है हमें जानते, आई एम होपिंग एंड प्रेइंग दैट एवर्टन डू अ मैडनेस कुछ, लेकिन होने नहीं वाला, लिवरपूल जीतने वाली है पक्का यार। क्या लगता है यार, लिवरपूल एवर्टन कुछ भी चांस है एवर्टन का डिस्पाइट द लास्ट इक्वलाइजर अगेंस्ट लेस्टर? I don't think so, yeah. You know, being very honest, you know, obviously one is playing to save their Premier League status, one is trying to win the Premier League. तो दोनों के एफर्ट जरूर होंगे, बट व्हेन यू लुक एट द डिफरेंस एंड द गल्फ इन क्वालिटी, ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि एवर्टन इज यू नो सच अ बैड टीम, बट द वे दे हैव परफॉर्म्ड, यू नो द वे दे हैव परफॉर्म्ड, और ऑब्वियसली उनका डिफेंस बेसिकली चैंपियनशिप लेवल है, ठीक है। when you look at the attack, they still have the likes of Richarlison, Calvert-Lewin, so on their day they can create, you know, cause some problems. Even Gordon is a good player, midfield में Allen है, he's a good, you know, he's a good guy, good player, but then overall when you go to Anfield, you know, where you are basically trying to save your life, and Liverpool is hungry for blood, they want to keep that pressure on City. But you know, if some madness can happen, it's going to be the derby. I won't be surprised if it's 5-0, you know, like मतलब 10 मिनट डिफेंड करने में लगे हुए हैं, you know, I won't be surprised. इंटरेस्टिंग 4-0 5-0 उनको लिटरली अभी दिमाग में बस एक ही चीज होगी कि मोर देन सेविंग देयर स्टेटस इन द प्रीमियर लीग, मेक श्योर लिवरपूल इज नॉट गोइंग टू विन अनदर टाइटल। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इट बी अ डर्टी गेम, मतलब एज मच एज मे बी इट बी अ डर्टी गेम, ट्रस्ट मी, दिस इज द गेम। अगर लिवरपूल आ जाती है विद 11 पीपल जो जा रहे हैं एज इट इज फ्रॉम ऑफ द फील्ड, इट बी एन अचीवमेंट, बट लेकिन 3 पॉइंट लेगी। वही है डिफरेंस बिटवीन यू नो लिवरपूल, सिटी एंड अदर साइड्स आर लाइक दे आर आल्सो विनिंग अगली। लिवरपूल हम इतने गुण गा रहे थे, मतलब आई डोंट नो, आई वुड लव टू डू इट, शायद यार लिवरपूल फैन वुड एग्री दैट अगेंस्ट चेल्सी लिवरपूल हैव प्लेड व्हाट थ्राइस दिस सीजन। Trust me,
हम अगर chances लेते we should have won. There is the debate. Not that Liverpool were bad, they were great as well. लेकिन वही है कि they are beatable. But the problem is they are having that knack of winning ugly, and when जो चाहिए ना वो जीत रहे हैं. They lost against Inter Milan जब नहीं चाहिए था, मतलब that is the point. Like they are managing their timing very well. और लक नहीं हो सकता भाई, अब 10 महीने हो गए सीजन के ऑलमोस्ट, नहीं होने वाला लक. मेरे ख्याल से लैम्पार्ड यार, as much as I hate to say it, यार जा रहा है वो नीचे. That's what I'm seeing. Like again, every week we are almost talking. I didn't expect Burnley to come back without manager win. Southampton, bhai, matlab they beat easily. So for me, Lampard is going down. But again, any Chelsea fans in the house? Hopefully, we have some Chelsea fans. Be and like kar dijiye. And get in your score predictions, everyone. Liverpool, Everton, Manchester United away to Arsenal. Lekin Chelsea, West Ham. After that 4-2 humiliation, मैं बोलूँगा. Against Arsenal, humiliation ही है. West Ham. एक गलत टाइम हो गया. West Ham have done really badly when it comes to just after their Europa League game. तो वो मैं बोलूँगा थोड़ा टाइमिंग हो गया प्रॉब्लम. अगर नेक्स्ट वीक होता तो we would have been much better. लेकिन I think David Moyes, as much as you would say यार he has basically flattered to deceive over the years, West Ham is probably the level for him where he's doing really good. And मतलब probably you can say कि यार David Moyes फुटबॉल जो खिलाता है, for that kind of football, जैसे I think back in the day you had obviously Everton में you had obviously Fellaini, right? उसके पास सूचक है, राइस है, और he is kind of building on that, और he has shown that वो फुटबॉल भी खिलाता है, and that is somewhere where मैं बोलूँगा Chelsea are vulnerable. We saw on the wings, especially on the crosses, or West Ham are really capable. And I am very वापस से 3 games लगातार at home we have done terrible. 29 years से we have kind of first time we have lost thrice. और मैं surprised नहीं होगा अगर we drop points again, and it's really close. I think it's just a 5-point gap. तो yes हम third है, लेकिन फिर भी I think I would say that we will not drop all the points. Return leg Chelsea West Ham, that was painstaking as well. आपको याद है तो so for you Anshuman, West Ham के team में just as a neutral, who do you think will be the most dangerous player for Chelsea this weekend? I do feel it's going to be Souček. The reason I'm telling you Souček is because he can do the job at both the ends. And West Ham basically thrives on their crossing. So when you look at Souček, he's always there, with his presence in both the boxes. But I do feel that their priority at this point of now is like absolutely set. Absolutely set with Europa League, winning the Europa League. So I won't be surprised. I won't be surprised at all if they even decide to rest few of the guys. Just to make sure that no one is getting injured before their big game against. Yeah, good point. Yeah. So no, काफी as an interesting point है, क्योंकि yes, but again it's a derby, or return like we are the 3-2. The thing is, there's a lot of derbies in London. Fulham is also, when they come to play. West Ham is a proper derby. West Ham Chelsea is a proper derby. But when you see the West Ham team in the past, regardless of what they do, they barely win against the bigger teams. For some reason, even if they are going through a good phase, somehow they end up losing. Here and there, they do get those wins, but most of the times they're not. And that's why I feel that in this game, I don't think they're going to put that much effort. They will probably save their legs or few of their players just to make sure that, they can go fresh against Frankfurt. Frankfurt, they need the legs need to be ready for sure. Frankfurt, because Frankfurt knows one brand of football, and that is going to just hit them on the counter. So they will have to be alert, and they will have to be assured about what they are going to do, because when you play teams like those, one mistake and boom. So. Exactly. Again, I'll come to this question. Again, Chelsea, Man U, both trying to grab, Declan Rice. मैं इतना बोलूँगा, यार, every season we get linked to Declan Rice. He has been a Chelsea man through and through. Again, lot of people have been Chelsea fans, and he's great. बहुत अच्छा कर रहा है. He has evolved his game, और he's someone, जैसे I think Anshuman ने भी बोला था about someone who can actually stay there, do a job जो इंग्लैंड के लिए करता है वो, लेकिन वेस्ट हैम के लिए doing much more. तो आप बोलोगे there might be a debate that now his role has slightly changed to what he was, 12 months ago. So maybe coming to a Chelsea, Man U may not, like, मेरा personal opinion है,
may not suit him as much on a personal front because he can contribute much more. So he can be like a central figure of a team. Uh, in Chelsea, Man U, जो चाहिए दोनों teams को अभी, we need a proper DM. Because Jorginho, as much as he's been great, वो proper DM when it comes to physicality नहीं है. That's what we need, and he has just evolved over that. So, and the price tag, भाई, मतलब again, price tag is a different level. 150 million यार, David Moyes पता नहीं क्या फूक के आया वहाँ पे. वो तो कुछ ज्यादा ही हो गया. But I'll ask अंशुमन यहाँ पर यार, Declan Rice to Manchester United, every 2 months it comes. Like, what do you think? No. मतलब लॉजिक कोई सेंस नहीं है. ठीक है, probably they might even be in the Champions League. United won't be. Abhi, I was having a conversation or discussion, and I simply said that guy might be playing Champions League with West Ham next season. They have more chance, they have a better chance than United at this point of time. Even Europa ke liye, like the thing is that if West Ham are getting Europa, United are getting Europa, and where he is the captain, so matlab I don't think there's whether it's Chelsea, whether it's United, no one is going to pay 100 million for someone like Declan Rice. Simple as that. I hope so. Chelsea ka pata nahi. United under Ralph Rangnick, they won't. Yeah. Now you will see United making the signings in the region of 60-65. Max 70, just like the model that City uses. No one can go out and obviously Harry Kane was a totally different ball game. They were desperate. They do want that Champions League, and they had everything in place. Just they wanted the striker. They wanted Harry Kane last summer, obviously, because Haaland was not available. Haaland was even more expensive than. But now Haaland will be coming in for cheap. They are, not even bother to make a try again on Harry Kane. So I am really hoping that Papa Perez come into the discussion and takes Haaland away from City, because Haaland to City. नहीं होने वाला, वो ज़्यादा हो गया थोड़ा, लेकिन देखते हैं, मतलब वो भी सकता है. At this point of time, till the time the deal is not signed, I expect, because now all of a sudden I don't see Mbappe going to Madrid. Have you seen the contract they are offering him? It's 100 million loyalty bonus. He will get 100 million just to stay at Paris Saint-Germain. मतलब खेलना नहीं है उसने खेलना नहीं है, उसको बस रहना है वहाँ पे. अरे वो 250 मिलियन मना कर दिए तो पापा पेरेस का भरोसा नहीं है, to be very honest on the other. मैं वही बोल रहा हूँ कि he needs a big signing this summer. He needs a big signing. वो उसने पिछले सीजन भी कुछ नहीं किया. He made sure that जिसको जाना था वो जाओ, and he made sure that he will have the fund for this summer. So I want, बस यही है कि Perez versus Raiola का ego clash that can come into play, but I have no doubt कि end of the season we might see Haaland over there. Mbappe का अब tricky लग रहा है because उसकी फैमिली मिल रही है भाई, पूरे शेख वेख सभी आ गए भाई, उठ के फैमिली से मिल रहे हैं, एमिर से मिलवा दिया, मतलब they are desperate. वो उनका ब्रांड है. Mbappe is PSG at this point of time, not Messi, not Neymar. It's all about Mbappe अभी, ठीक है, और वो उसको जाने देंगे, then PSG won't be taken seriously. और ये दिख रहा है कतारी ओनर्स को कि अगर अभी हमने अगर एक बंदा जो कि प्राइम में है, जो वर्ल्ड कप विनर है, जिसके पीछे दुनिया पड़ी है, and imagine if he lives for free. मतलब यार हालैंड टू सिटी के होने के बाद तो मुझे लग रहा है एम्बापे कहीं और चल जाए तो बेटर है. दैट्स द फैक्ट. लेकिन अगेन आई डोंट नो व्हाट यू हर्ड इट हियर पीपल. आप देखो, अंशुमान ने सेड इट, मतलब ट्विस्ट इज स्टिल पॉसिबल, तो यू नेवर बी सरप्राइज. और हम कवर करेंगे, फाइनलाइज कुछ नहीं होता तब तक यू आर स्टिल इन दैट रेस. यार कवानी मैं लेना चाहूंगा क्वेश्चन ऋषिकेश का और सायद का. लाइक कम ऑन, कवानी एज मच एज ही हैज बीन दैट इम्पैक्ट प्लेयर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द पास्ट, यार वी एज चेल्सी हम जानते हैं यार, taking strikers in the last doesn't really work, unless you're a Didier Drogba. It does not work. आप देखो फाल्काओ की बात ले लो, आप पैटो की बात ले लो, आप basically we had so many strikers. Giroud was probably the only one who was close to that. लेकिन हाँ, Cavani, yeah, we don't need just an impact player. We need a proper striker along with Havertz जो rotate कर पाए. Both of them can get 15 goals each. We need that kind of striker Chelsea में. और for me, Broha is that person. Get a youngster जो motivated है, who can finish well, and with Havertz, both of them kind of play, both of them play around 30 games each. हम 60 games खेलते हैं. Both play 30 games, and
both kind of score 15 goals, and I will take that. I will take that at this point in time. That is what we need to convince Broha. That's our future. We need more experience on the wings. Wings में they're not able to finish well. We need more experience on the wings. वहाँ पर एक चाहिए. मैं तो बोला हूँ क्या even a youngster who's experienced like Chiesa would be ideal despite his recent injury. अंकित भैया रीस जेम्स को बचा लेना. पेरेज इस साल तो यार बच गया वो. रीस जेम्स कहीं नहीं जाने वाला. टेक इट इन राइटिंग. इस साल तो नहीं जाने वाला. फ्यूचर में यू नेवर नो. फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है. एम्बापे नहीं जाएगा. डी मरिया वापस मैन्यू आएगा. ओ भाई वो तो फनी हो गया. लेकिन एनीवे even I think so, absolutely. Lekin let's see. As in, anything can happen, right? If Lewandowski gets to Chelsea, how would you react? Okay, Hardik, great point वहाँ पर हार्दिक का, क्योंकि मैंने actually throughout last summer मेरे priorities थे, right? तो पूरी दुनिया करी थी हालैंड टू चेल्सी. मेरा रैंकिंग एक्चुअली था not that Lewandowski आने वाला है, but just to share, my ranking always was people read too much into the age. They don't actually watch Bundesliga football week in week out. आप बोलते हो फार्मर्स लीग, नहीं भाई, जो करता है वो डिफरेंट लेवल है. Lewandowski was number 1 in the last, say 18 months for me, and then came Lukaku, and yes, I have been proven wrong in Lukaku. I can accept that, right? लेकिन हाँ, for me Lewandowski was number 1. लेकिन again आप बोल नहीं सकते any striker will be great. मेसी की बात कर रहे थे हम. Messi has gone to PSG and he has not been the best of the best players at PSG. Again, lot of reasons हो सकते हैं, लेकिन वही है. आएंगे यार, उस पर आएंगे. लेकिन अगेन कमिंग बैक टू चेल्सीज गेम अगेन, मैं लुकाकू की बात किया था. और लुकाकू क्यों किया था? क्या लुकाकू उसको एक चीज है, बाकी लोग I will just try, that Farmers League बोलना it's easy, Farmers League में यहाँ पे so called greatest of all time नहीं कर पा रहा कुछ यार, तो वही कहना it's very easy when you are with a team. It's not like he's scoring 15 or 20. It's a new start, exactly. तो आप वॉर्नर को देख लो ना, वॉर्नर को देख लो क्या हुआ. He's scoring 40 plus for the last 6 seasons. Lewandowski is not a joke. कहीं भी जाएगा. And when you look at the age, तुम उसके साथ यार उसकी इंजरी रिकॉर्ड भी देखते हो. Lewandowski लास्ट टाइम उसने 5 गेम कब मिस किया किसी को याद भी नहीं होगा. सेम गोस विद बेंजेमा. ठीक है, वो ऐसे बंदे हैं ना जो they have kept their body उस तरीके से, and उनके मैनेजर्स ने उसको उस तरीके से मैनेज भी किया है. हाँ, you can say कि they are not that much physically tested because वहाँ डिफेंडर्स उस क्वालिटी के नहीं है. यहाँ पे तो हाथ मुक्का मार देते हैं, प्रीमियर लीग में सर्वर फोड़ देते हैं. वो वहाँ पे नहीं करते. ये तुम बोल सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन नॉट जस्ट और साला ये तो फार्मर्स लीग है, 40 गोल मार दिए तो क्या हो गया. तो you just cannot. अगर वैसा है तो भाई मेसी से मरवा दो 40 गोल पीएसजी में, देख लेते हैं. Exactly. चलो एक साल दे दिया, अगले साल अगर वो 40 गोल मार दे तो चलो अच्छी बात है. ग्रेट पॉइंट अंशुमन, क्योंकि यार वही है, मतलब पीपल जो करते हैं ना, वो दे स्टैट्स को देखकर बेसिकली दे रिएक्ट. यार आप बैठकर देखो फुटबॉल. मैं एक्चुअली डच फुटबॉल बहुत फॉलो करता हूँ. मैं बोलता हूँ यार एट द एंड ऑफ द डे आप इतना मतलब क्रिटिसिज्म जो मिलता है अनफेयर. आप देखो व्हाट अयाक्स डिड इन द चैंपियंस लीग इन लास्ट 3 सीजंस. वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है भाई. आप देखो, बैठकर देखो. आप देखो एंटनी अभी क्यों लिंक हो रहा है विद ऑल द बेस्ट एज इन क्लब्स आउट देयर. एब्सोल्युटली दैट इज समथिंग नीडेड. एंड यस ऑफ कोर्स अंशुमन ओपी इन द हाउस हो जाए. यहाँ लकाका की बात कर लेते चलो, क्योंकि मैं एक्चुअली थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूं. मैं तो हंसा था भैया, आपको अगर याद हो when we talked about Lukaku before, I literally laughed. मैंने बोला ये चेल्सी ने क्या किया है ये. they have made themselves a laughing stock by going out and getting. यार अंशुमन, मैं उस पर ही वापस आना चाहूंगा, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट द प्लेयर्स एबिलिटी हियर, इट इज अबाउट द प्लेयर्स एप्लीकेशन. मैं वही शेयर करना चाह रहा हूँ. आई एम जस्ट शेयरिंग इट राइट अवे अगेन. This was what Lukaku was against Arsenal. So this is a man, ठीक है, who has not started for the last 1 month for Chelsea. ठीक है, उसको मिलता है मौका against Arsenal, जो क्लब जिसके साथ you are having probably the best match of the season till now, along with Aston Villa, and that is a एक स्कोप मिल रहा है कमबैक का, एक स्कोप मिल रहा है to prove that you are playing for the badge, or you are playing at home in front of crowd which is only season ticket holders, जो आपके loyal crowd है. चेक आउट इज हीट मैप पीपल. क्या बोलोगे, मतलब इतना बदतर मुझे खड़ा कर दो वहां पर, आप एटलीस्ट भागोगे. दोस 7 टचेस वाजंट अ कोइंसिडेंस इन द प्रीवियस जो रिपोर्ट आई थी. दिस इज समथिंग दैट मैं स्ट्रांगली बोलूंगा. लुकाकू का प्रॉब्लम अंशुमान इज नॉट जस्ट हिज एबिलिटी वाज ऑलवेज देयर. हाँ, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा ही वाज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड ही ऑब्वियसली बहुत बुरा फर्स्ट टच है, बहुत बुरा है इन टर्म्स ऑफ बिग मैचेस, इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स.
Lekin, I think with Belgium team, with Inter Milan, there were moments where he took game by the scruff of the neck. He actually tried. वो trier एक runner था, always वो physical ability दिखाता था. That is something I think वो एक mentality issue है. He is not feeling at home or he's not wanting to be at Chelsea. और कुछ something more has happened even more despite him बोलना है कि यार I am a Chelsea man through and through right now. He's come back and said that. लेकिन बोलने से नहीं होता, आपको पिच पर दिखाना पड़ता है. So for me, along with Christensen, और very strong statement मैं बोलने वाला हूँ, along with Christensen, I wouldn't want to see Lukaku starting for Chelsea this season. And I'm really serious about it. And मैं हाल ऊपर कर जाऊंगा. Anshuman told me, he warned me at the beginning of the season. हमने बात किया था, and he was proven right. Whatever may be the reason, we might disagree on ability, but I think the fact is he has not performed. It's been 9 months, boss. As in he has to perform. So for me, I think against West Ham United, which is again, both physical side, I think I don't think we can change our structure because I think this structure is something हमें देते आ रही है. As much as मैं बोलना चाहूँगा 4-3-3, I wouldn't want to go 4-3-3. So I am going with this. Again, any Chelsea fans in the house, आप बोलिए. What do you think? Malang Sar, again, unfortunately, Tuchel has said that Rudiger is not fit, Kovacic is not fit. Two of our players of the season, they are not available. भाई मैं तब चाहूंगा रीस जेम्स को आप विंग बैक पर डालो प्लीज. रीस जेम्स नीड टू क्रिएट. हमें ज्यादा क्रिएशन की जरूरत है. Aspilicueta, as much as आप बोलोगे Chalobah should be playing, Aspilicueta is better on crosses, जहाँ पर against West Ham we are vulnerable. तो इसीलिए I would continue with Aspilicueta despite whatever mistakes he made. Get back to what worked for you. Kante Jorginho worked for you. Get back to that in the past. So just go with that. लेकिन I don't know भाई, मतलब अंशुमन क्या लगता है, मतलब Chelsea West Ham, what are you predicting? 2-0 Chelsea, easy. पक्का? मैं बोल रहा हूँ their mindset, वो जिस तरीके से पिछले 2-3 गेम खेले हैं प्रीमियर लीग में, that shows basically कि भाई we are not going to put effort over there now. And you look at the performance they have put up in Europa. मतलब लियोन को कुत्ता बना देना उनके होम स्टेडियम पे, dominating possession, dominating in every aspect of the game. ठीक है. So their heart and mind is set now. They know कि अगर हम यहाँ पे चलो ठीक है, अगले सीजन अगर हम यूरोपा नहीं भी खेल रहे, ठीक है, still we can get some decent players in. And अगर राइस के पीछे अगर कोई पागलों की तरह आया तो we can easily take 100 million from them. उससे कम में तो हम बेचेंगे नहीं, even without यूरोपा. So ये उनका mindset है. They are gambling on two things. पहली चीज ये कि यूरोपा पूरा फोकस. Obviously भाई 3 मैच जीतोगे यूरोपा विनर्स, ठीक यहाँ पे. और दूसरी चीज ये कि they have few players who can fetch them money. So they are more than happy to go with that route as well, that if they don't have European competition next year, they can still get someone like Declan Rice on the market, and they can demand 80 to 100 million, and they can get 3 to 4 players from that money and get that team rolling again. Yeah, मतलब मैं quickly लेना चाहूँगा राजेश. Again, big up to Rajesh भाई, मतलब he actually knows this stuff as well. लेकिन like, see, the issue is not about the type of footballer here. The issue is the person. Yeah, I will. Since he disagrees, I will just say that I am not comparing them as footballers. I'm comparing the leagues. I'm comparing the leagues. That for people, it's very easy to say that it's a farmers league. वो farmers league बोलना बहुत आसान है. That people go out and just say, अरे ये तो farmers league है. But farmers league में भी भाई perform करना पड़ता है. ठीक है. फार्मर्स लीग में भी अगर तुमने 40 मारे हैं भाई पिछले 6 साल पे लगातार, तो तुम्हारे पास वो कैलिबर है, तभी तुम 40 मार रहे हो वहां पे. Exactly. ठीक है. People, that's why I was very circumspect about Tadic. He went over to Eredivisie and he was creating havoc. शुरू में जाते के साथ टेक्निकल था, and he said that यहाँ पे प्रीमियर लीग में उसको उस तरीके से मौका नहीं मिला because players are very tough, physicality and all that. I bought into Tadic when he started performing in UCL. Then he was creating, he was scoring, he was doing everything. So that's what I'm saying, that at this point of time, I am not, putting Messi into question. What he has achieved is, if someone is putting his achievements into question, that makes no sense. I'm just saying, wherever you go, you have to perform. At Barcelona, it was all about Messi. Everything went through him. Right now, they have players like Neymar. They have players like,
Mbappe. So Messi is not the focal point. Messi is not the focal point, and he's struggling to deal with that. अब मुझे गाली देना है दे दो, फर्क मेरे को घंटे का नहीं पड़ता, क्योंकि जो फैक्ट है वो रहेगा, ठीक है. अब तुम उसको नंबर 10, Messi was in a free flowing role. I have seen Messi along, बुस्केट्स के साइड में खड़े होकर बॉल ले रहा था बार्सिलोना के मिडफील्ड पे, ठीक है. He knew that he could go anywhere और उसके अकॉर्डिंग बाकी की टीम को खेलना है. यहाँ पे ना तो एम्बापे पीछे आएगा, ना तो नेमार पीछे आएगा, और अब तो मेसी भी पीछे नहीं आता. And that's where they struggle in the bigger competitions, and that's why I said in the beginning that I do see PSG as favorites, but it's their defensive work that will let them down. वही हुआ वापस से 2-0 up, 3-2 in 15 minutes, boom, out of the competition. मतलब मुझे भी याद आ गया रियल मैड्रिड का थोड़ा. And by the way, people will be back for the UEFA Champions League, big UEFA Champions League semi-finals. I know, pains me to say Chelsea are no longer there, Champions of Europe. लेकिन हाँ, we'll do that on Monday as well. That will be live around the same time, 7 बजे. So remember that, don't forget that. Chelsea should go with 4-2-2-2 and then see the magic भाई. Again, हमने ट्राई किया था. The thing is, यार, these things need to be tried and tested आपके प्री सीजन में, आपके बेसिकली इंटरनेशनल ब्रेक में, when you have time with the players. आप सडन से आप when we need the 3 points, we cannot go that way. And I think if we are going 4 in the back, definitely 4-3-3 होना चाहिए शायद. I like to disagree here. Yes, हमारे पास लिवरपूल जैसे प्लेयर्स नहीं है, especially in midfield, kind of break the other person. But for me, it's about Ziyech 4-3-3 में he really does well, absolutely brilliant. Yes, and we'll just kind of wind up in a few more minutes, people. Just noticed my stream was behind, didn't mean to interrupt the flow. No problem, bro, no problem. Yes, और यार by chance आपको नहीं पता है तो yes, we are monetized. So you always have that option. अगर आपका comment नहीं लिया जा रहा, you can always prioritize your comment with that. But again, only if you can afford. जैसे राहुल बोल रहे, thank you राहुल याद दिलाने के लिए. Yes, 100% हम जानते हैं. And it's about basically any players kind of being there. It's about a footballer. You are a person first, so you're going to a new country, आपको time लगेगा, and that's we have noticed it time and again. It's not basically easy. मतलब with managers it's slightly different because you're not actually on the field, but with players you are there, so you are you're rubbing shoulders with a lot of other players. Yes, यार कमान भाई, मतलब ये नहीं बोलने वाला हो, आपको पता है, आपको नहीं बोलने वाला, शायद आप कुछ भी बोले नहीं बोलने वाला हो, आप कितना भी बैंटर करो. लेकिन again, thanks for joining as always, and I love your comments and banter for sure. Just while I'm in the chat, yes, finally having a Chelsea fan always feels good. Yeah, Chelsea fans, आज comment नहीं है कुछ, करिए भाई. GG Ayush, thank you join करने के लिए. Let me know what do you think. मैंने actually already cover कर दिया. By chance people have joined late, do check out. We talked a lot about Hall of Fame. We talked about Arsenal, Manchester United. We spoke about obviously Liverpool, Merseyside derby, but Chelsea, West Ham United as well. We did cover the starting 11, so DG Ayush, just while I do, let us know, any Chelsea fans in the house, would be great. What do you prefer for this game? मेरा तो ये logic है. Again, just going by recent performances, मैं बोलना चाहूँगा, we cannot just chop and change the entire team. We don't have the personnel. Unfortunately, we have 4 people injured right now, so we have to go with what we have. But again, just change the tactics a little bit, change the mentality. वो mentality, motivation level, hopefully players will get to know. That's what I would need. And मैं यहाँ predict कर रहा हूँ Chelsea West Ham, we will definitely get back. But like I said, I won't be surprised if we drop points. But again, आज मेरा draw day है. I don't know. I'm going for a 1-1 draw. Chelsea West Ham. हाँ, last time 3-2 हुआ था, but I would take a 1-1 draw at this point, honestly speaking, because I am seeing Manchester and Arsenal also being a draw. So वो लोग drop करेंगे points and Spurs being Spurs. I think that's okay with me. Okay, no problem bro, no problem. And of course thank you join करने के लिए from Tanzania always. And yes, like the stream. यार और भी है काफी kind of अच्छे matches है इस weekend. Of course rivalry week एक reason है इसलिए हम बोल रहे हैं, right? Rivalry week. तो Serie A में some madness is happening as well, right? As in वहाँ पर of course Coppa Italia बहुत ही painstaking moment for me as an AC Milan kind of fan as well. लेकिन for me यार Inter Milan are favorites against Juventus in the Coppa Italia, so Serie A के लिए AC Milan कर दो. लेकिन I think we are having 2 great games, Inter versus Roma. So people out there mark कर दीजिए कैलेंडर अपना. Inter versus Roma है इस weekend, Lazio versus AC Milan. Hopefully हम निकालेंगे review videos उनके लिए. काफी अच्छा चल रहा है. लेकिन यार Mourinho, again being a United fan, being a Chelsea fan, we have seen Mourinho.
you can say dinosaur football खिलाते of late, but you think Roma is probably the place for him because he has become a cult hero भाई Roma में. वो कहीं पे भी जाता है भैया, ही हैज हिज फैन बेस, ठीक है. Yeah. स्टैंस जो जिनको मैं बोलता हूँ वो, ठीक है, वो ब्लाइंडली फॉलोअर्स जो होते हैं, ठीक है, एंड ही मेक्स हिज फैन बेस बिकॉज ऑफ द पैशन एंड द वे ही इज ऑलवेज very vocal about what he sees the problem is, and that's what backfires at time. But when you look at the Italian mentality, it's very different from the British mentality. Those are tough people, so they like to go out and perform. Over here, they will just involve in getting the PR things done. ठीक है, यहाँ पे PR के ड्रामे चलवा लो इनसे. इंग्लिश प्रीमियर लीग में वहाँ लिटरली पीपल वो मेंटालिटी है उनकी. At the age of 35, 36, you look at the likes of Chiellini, Bonucci, इनको हेटरेट मिलता है तो they go out and try to perform. वो यहाँ पे आके सोशल मीडिया पे बैठ के ट्वीट नहीं मारते, अरे we will try to do better next time. ये बोनुची और Chiellini के ट्वीट्स नहीं आते, they go out and try to perform. तो वो चीज है. तो वहाँ पे and when you look at some club like Roma, ठीक है, तो फैमिली मतलब जनरेशन से उनकी फॉलोइंग चलती आ रही है. सो दे नो व्हाट दे वांट. सो व्हेन दे सी समवन हु वांट्स टू डू बेटर फॉर देम, so they will definitely go alongside him. And at this point of time, they are at the 5th. They will go to Europa, and with a bit of help, if Juventus falters, if Roma can get Champions League under Mourinho, that would be, I think, big call. वो टाइमिंग तो लग गई यार, दिवाली होगी उसकी तो टाइमिंग के लिए. That's what I'm saying कि अभी Roma, they are at 5th. They have a game in hand against Juventus. ठीक है, तो अभी 32 गेम्स में उनके 58 है और 32 गेम्स में 33 गेम्स में 63 है यूवेंटस के. So you win your next game. I think this is against Inter. Yeah. If somehow, I don't see they will win, most probably they can make a draw, but if they can win against them somehow, then that brings AC Milan back into the conversation, and that brings Roma for the conversation into Champions League. Yeah, मतलब again it's very close call. You're right. Probably Juventus Roma अगर है game in hand, which I probably do not know. Great point by Anshuman. क्योंकि हाँ, that can be the difference maker. So Roma have मतलब they have something to play for sure. Pretty sure कि यार मतलब they are doing well as a team. Again, AC Milan on the other hand, they have great kind of rivalry as well as great motivation for मतलब it's high time. Plus जो उनका जो चल रहा है ना in terms of the bidding war, I think just like Chelsea, they might get a new owner as well. तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, where they end up in terms of who they get. क्योंकि यार I have seen few comments. Sorry, just a moment. I have seen few comments about the watch along. So Ayush was asking whether I'm doing the watch along or not. I'm doing it for tomorrow's game, so you can join it. And Ayush has been a regular on my channel, so it's good to see him out here. So yes, absolutely. And he said Manchester United 2-1. Yes, and यहाँ पर मैं वही बोलना चाहूँगा in terms of the ownership. Again, lot of transfer rumors चल रहे हैं. We'll be covering all the rumors and what is reality, because AC Milan अगर उनको मिलता है great owners, मतलब they are going to be a Galactico team again possibly. मतलब again let's see Serie A अगर जाती है, but interesting games यार, Serie A मिस मत करना. I would say यार इंडिया में unfortunately इतना cover नहीं किया जाता है for whatever may be the reason. I don't know what is the reason. लेकिन I actually love Serie A. वो एक unpredictability है, that is what I love about Serie A, right? Simply put, right? As in आप predict नहीं कर सकते हो. और यहाँ पर cricket stream के बारे में पूछ रहे थे, I think राहुल. तो राहुल आज नहीं कर पाए. We will certainly do tomorrow. You will actually definitely get some content on Almighty Blues cricket. So again, people out here, anyone जो cricket follow करते हैं, not just RCB, not because मैं RCB fan हूँ, Almighty Blues cricket. So all Indian cricket will be covering in the future as well. And हम सब franchises के बात करते हैं. So hopefully you will be there. We are going to release the video or be live tomorrow. मैं post करने वाला community में राहुल, based on the time certainly. कुछ और comments quickly लेते हैं before we end the stream. तो a lot of people going for Chelsea. Let's hope. Okay, together for us. हम करेंगे यार, plan करते हैं definitely. We'll do one together. And yeah, मैंने भी actually watch along last एक हफ्तों से बंद कर दिए, 1.5 हफ्तों से. So for me, it'll start again, but not
this if week. you are लेकिन free भैया, you can join tomorrow for the United versus Arsenal game. I was about to ask, but मैंने यहीं पे पूछ लिया. मैंने बोला आज DM करूँ अभी आप. चलो मिलते हैं फिर. श्योर अगर ठीक आप है. कल फ्री हो तो I will just add up your name. ठीक है डन है करते हैं. ठीक है. चलो फिर तो I will start. और अगर आप, मैं 4 बजे स्टार्ट करूंगा कल, गेम से 1 घंटे पहले मैं करता हूँ. So if you are busy उस टाइम पे तो you can join a bit later. ठीक है. I'll join later, but मैं पक्का हूँ. एक बार आपका स्ट्रीम खत्म हो जाए, just call me. We will decide कि किस तरीके से करना है. Absolutely. In my opinion, Bundesliga is more entertaining to watch than Serie A these days. Serie A has become too slow and a less intense league. But वही है ना Rajesh, the more the mistakes for the neutral, it's better. That's what I see it. लेकिन I think Bundesliga में Bayern Dortmund है. मतलब this season for me Bundesliga थोड़ा disappoint हुआ है. As much as Bayern team नहीं है dominating team, but still they are dominating. Imagine मतलब Bayern अगर Nagelsmann जो किए मतलब हगे है against Villarreal, that team also is not able to kind of get a fight from other teams. तो मतलब क्या ही बोलोगे. मतलब डॉर्टमंड का क्या फ्यूचर लग रहा है अंशुमन? कोई फ्यूचर नहीं है. सेलिंग क्लब का कोई फ्यूचर सुना है आपने कभी? लेकिन मतलब अगर डावी नूनेस वहां जाता है तो लग रहा है मतलब दे कैन अगेन चैलेंज बायर्न. फ्रस्ट्रेशन निकालने वाली है बायर्न. कुत्ता बना देगी अभी डॉर्टमंड का. ठीक है, वो बेचारे ऑलरेडी बाहर हो गए चैंपियंस लीग से. अगले सीजन फिर 2 प्लेयर लूज करेगी अपने अच्छे वाले डॉर्टमंड. यही उनका काम है. So कोई सेंस वो that's why I said कि मतलब उससे ज्यादा at this point of time जो है ना वो शो कर रही है लाइप्जिग. Obviously they are a new club. They are a new club, तो उसको अभी मेंटेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा. बट उनसे ज्यादा अभी वो शो कर रही है कि भाई हमें कुछ जीतना है. They are trying to hold on to their assets. They know they cannot hold on to everyone because they have been in this league for like 7-8 years. ठीक है, तो उनको वो चीज अभी मेंटेन करने में टाइम लगेगी. यहाँ पर वापस क्रिकेट फैंस को गेटिंग इन द कन्वर्सेशन यार. विल गेट टू दैट फॉर श्योर कल. एब्सोल्युटली. एफपीएल टिप्स दे दो भाई. मतलब अंशुमन है क्या आपकी टीम? मैंने यार दो महीनों के बाद बंद कर दिया था. नहीं, मैंने 2-3 हफ्तों से मैं थोड़ा बिजी था दोस्त वगैरह की शादी में, तो मैंने भी बंद कर दिया. या क्विकली यार मतलब अगेन मतलब हम एक्चुअली टाइटल चैलेंज गेम के बारे में बात ही नहीं किए. बट आई थिंक अमंग द अदर गेम्स कुछ लग रहा है सरप्राइज. मतलब मैन सिटी शुड अगेन दे शुड बीट राइट. एज इन वॉटफोर्ड है. वॉटफोर्ड अभी आई थिंक दे आर ऑलमोस्ट गॉन. यू कैन से कि मतलब वॉटफोर्ड नॉर्विच का तो हो गया. वो तो उनका कस्टमरी है. वो आते हैं जाते हैं. फुलहम इस साल आ रही है तो नॉर्विच जा रही है. अगले साल नॉर्विच आ जाएगी तो फुलहम चली जाएगी. लेकिन ब्रेंटफोर्ड टॉटनहम इंटरेस्टिंग हो सकता है. ब्रेंटफोर्ड हमें सिखाई थी कुछ काफी हमारे गेम में. तो ब्रेंटफोर्ड टॉटनहम वाला है. टॉटनहम कैन गो अप एंड बीट मैन सिटी. क्लीन शीट रख लेती है मैन सिटी के अगेंस्ट एंड दे लूज अगेंस्ट ब्राइटन इन द लास्ट मिनट. सो अनप्रेडिक्टेबल अभी तीनों टीम्स. यस बाय द वे आयुष भाई हम डिस्कस किए थे इसके बारे में. देखना जरूर. आप वॉच बैक द स्ट्रीम. वी डिस्कस लॉट अबाउट ट्रांसफर्स टू यूनाइटेड, Chelsea. Yes, absolutely. Or yes, I'm hoping everyone has liked the stream and do put in the predictions. We've discussed lots in the stream. Any last words that you want to do? I know हमें combined 11 भी करना था, but I think Anshuman needs to वो कर सकते हैं फटाफट से. मेरे पास है 5. हाँ, चलो तो 5 मिनट है. We can do the combined 11. People again chat आप भी comment करिए. This is going to be little controversial. मैं Arsenal play करूँगा. हाँ, you heard it right. Chelsea fan playing Arsenal. And of course Anshuman here, so it's going to be Arsenal Manchester United combined 11. So do put in your votes. क्या लगता है? तो formation बोलिए Anshuman. I'll go with you. I am going with 4-3-3. चलो 4-3-3 कर रहा हूँ. So who is the goalkeeper? तो David De Gea. जितना रामस्डेल सुपर, लेकिन फॉर्म की बात हो जाती और हम ले रहे पूरा सीजन का फॉर्म ले रहे. ठीक है. तो आई एम गोइंग डेविड डिया. व्हाट अबाउट यू? मी टू. David De Gea. और चैट आप ही बोलिए भाई. Anyone for Ramsdale by any chance in the combined level of Arsenal Manchester United based on इस सीजन की फॉर्म? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, but anyway there might be debate. I don't know. लेफ्ट बैक इंटरेस्टिंग भाई. लेफ्ट बैक कोई भी अच्छा नहीं किया इस सीजन. देखो अभी अगर हम कंबाइंड अगर बना रहे हैं तो वी विल हैव टू गो विद फॉर्म. और प्लस जो कि फिट है. ना तो टियरनी फिट है ना ल्यूक शॉ फिट है. तो टेलेस बाय डिफॉल्ट. टेलेस बाय डिफॉल्ट. वाओ, ये मतलब पहली बार सुना कंबाइंड लाइन में यार बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं. लेकिन हाँ टेलेस हैज बीन गुड. वो ये डिफेंसिवली थोड़ा सा है वल्नरेबल. हां वही है.
यार चलो स्क्रीन भी ऐड कर लेते हैं, चलो कर ही लेते हैं भाई. पीपल अगेन, डेविड डिया सब लोग बोल रहे, टेलेस सब लोग बोल रहे, अभी तक यार फाइट नहीं हुई है. लेट्स बी ऑनेस्ट, लाइक होपफुली विल नॉट हैव अ फाइट, लेकिन हाँ देखते हैं इफ वी आर एबल टू गेट थ्रू दैट एंटायर टीम में. तो बाकी क्या, राइट बैक अगेन टोमियासु, मैं बोलना चाहूंगा ही हैज बीन रियली गुड फॉर आर्सेनल. बट फिट नहीं है ना भैया, वी हैव टू गो अलोंग विद द गाइस हु आर प्लेइंग टुमारो. चलो कोई नहीं, अगर सीजन के बेस पे बनाएंगे फिर तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि कल जो है, कल तो हमें नहीं तो, अरे तो टोमियासु इज गेटिंग बैक टू फिटनेस, मतलब ऐसा नहीं कि टोटली कल नहीं खेलेगा ना, वही दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि कल नहीं खेल रहा हूं. एनीवन राइट बैक आप बोलिए, राइट बैक आपके लिए कौन होगा? लाइक फॉर मी इंटरेस्टिंग, मतलब बिकॉज़ आई वुड हैव गॉन विद डलो टू बी ऑनेस्ट. डलो राइट, हां वही क्लोजेस्ट है. मतलब बिसाका इज लाइक यू नो, ओटोमियासु जितना वो अनफिट होके है उतना बिसाका फिट होके है, सो दैट शोस द क्वालिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. Yeah, David Lea, Telles, Dalo as right back. Okay, Tomiyasu should come. यार हार्दिक मैं आपके साथ हूँ, लेकिन वही यार we'll go with lot of votes. फिट होगा तो टोमियासु walks in, you know, अगर he is fit, he basically walks in, but he's not fit. That's what, he's not fit. That's what the point is. So again, people, we are going for Arsenal, Manchester combined 11 जो भी fit है, और then based on the season's performance. Centre back, Ben White for sure. और भाई first few months तो काफी questionable था, लेकिन हाँ. Sure, I don't think so. So who are your centre backs? I think I will go with Gabriel, to be honest, just because of his was doing, you know. I think I will go with Gabriel, the way his physical presence is at this point of time, and the way, you know, simply because of the game he had against Chelsea, that guy was everywhere. और याद दिलाओ, अच्छा अच्छी बात है. नहीं, लेकिन अगेन पीपल यार आप बोलिए सेंटर बैक बेन वाइट, लेकिन वरान है सेंटर बैक, वही है मतलब फॉर्म प्लस फिटनेस, तो ही इज फिट. ही इज फिट फॉर टुमारो. सो यार आप बेन वाइट के ऊपर वरान लोगे, आप कम ऑन, इफ यू आर टेलिंग मी बेन वाइट यू आर पिकिंग, कम ऑन, लेट्स बी ऑनेस्ट. वो अच्छा किया है लास्ट फ्यू मंथ्स में, लेकिन वरान हैज टू बी द आंसर. आई थिंक इट्स जस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड वे, बिकॉज़ ऑफ मैग्वायर वरान नहीं कर पा रहा. दैट्स माय ओपिनियन. तो मैं he has also been injury, you know, उसका थोड़ा इंजरी का इश्यूज रहा है. वो इंटरनेशनल खेलने गया, कोई मतलब नहीं था उस गेम का, and he got injured. So देखो नहीं, मैं ये भी बोलूंगा कि मतलब अगेन वी माइट डिफर यहाँ पर अंशुमन थोड़ा. फॉर मी वरान जो है ना, मतलब he did at Real Madrid what he did because of having Ramos at his prime there. मतलब and Ramos did what he did because of Varane. So obviously it's a partnership. You cannot just play. अब तुम वरान के साथ कल को भाई खिला दोगे तुम किसी को भी, तो ऐसा थोड़ी है वो पार्टनरशिप. You know, imagine अगर स्मॉलिंग खेल रहा होता विडिस के साथ, ट्रू, या मगवायर खेल रहा होता फर्डिनेंड के साथ, क्या करते फिर? यार मगवायर ना सुपर सब, चलो मगवायर को सुपर सब डाल देते हैं. उसको रेस्ट दे दो इस गेम के लिए, लिंडेलॉफ डाल देते. नहीं, अरे लास्ट में आपको चाहिए ना किक मारने के लिए, ऑपोजिशन को इंजर, अपने प्लेयर को इंजर करने के लिए, तो यू नीड प्रॉब्ली, यू नो, उसके लिए भी नहीं लाऊंगा मैं लिटरली उसको मैं पिच पे ही नहीं आने दूंगा. अच्छा चलो मिडफील्ड की बात कर लेते हैं क्विकली. व्हाट आर योर पिक्स अंशुमन? मिडफील्ड में ब्रूनो तो जा रहा है. Regardless of what Xhaka does, I'm definitely going with Xhaka. अरे इंटरेस्टिंग. ओके, चैट बोलिए. मतलब आई जो आपने बोला ना अबाउट वरान, मेरा थ्योरी है फ्रेड के बारे में, because I watch a lot of, you know, I am going with Bruno, Fred and Xhaka. Bruno, Fred and Xhaka. अच्छा, इंटरेस्टिंग. एक बंदा जो कि पीछे सिट बैक कर सकता है. ब्रूनो ये फ्रेड इज बेसिकली आपका B2B. सो जब उसको मौका मिलता है, लुक एट द वे फ्रेड प्लेज व्हेन जब मैटिच खेल रहा हो या फिर जब ब्राजील में कैसेमिडो खेल रहा हो, सो ही प्लेज टोटली डिफरेंट. तो अगर उसको वो प्रोटेक्शन मिल रहा है, ऑब्वियसली यू नो, अब पार्टे है नहीं, so I am going with Fred and I am going with Xhaka. यार लेकिन पार्टी अच्छा चलो है नहीं, इसलिए मतलब दैट इज द पॉइंट. लेकिन अगेन लोकोंगा इंप्रेसिव है, लेकिन अगेन आई काइंड ऑफ, यार बहुत इंटरेस्टिंग, हम डिफर नहीं कर रहे यार, क्योंकि यस आई एग्री विद यू, Xhaka कैन बी योर डिफेंडर देयर कंपेयर्ड टू ही कैन बी आवर मैच ब्रेकर और यू नो मैच मेकर और द ब्रेकर. वो उसी तरीके से खेलता है, देयर इज नो इन बिटवीन. मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग, जनरली होता नहीं कंबाइंड लेवल में. चैट भी एग्री कर रही है, पैनल भी एग्री कर रही है. ये तो मतलब भयंकर हो गया. यार रोनाल्डो को तो पहले डाल देते, चलो रोनाल्डो को डाल दो. हाँ, वो तो रोनाल्डो और साका डाल दो, उसमें कोई डिबेट ही नहीं है. साका, लेकिन इस सीजन के मुताबिक डालोगे? साका ऑब्वियसली.
आई एग्री विद। अब वो लेफ्ट विंग का देख लेते हैं यार, मतलब अगेन आप यू कैन आर्ग्यू कि सैंचो हैज हैड अ गुड सेकंड पार्ट ऑफ द सीजन, बट nowhere close to what I think ESR has done, नहीं एमिल स्मिथ रो? आई थिंक ओवरऑल अगर सीजन देखा जाए तो ही हैज बीन गुड। सांचो के साथ वो फ्लुएंसी अभी नहीं है, यू नो, ऑब्वियसली आई लव सांचो, बट अगर इफ आई हैव टू गिव रोनाल्डो, यू नो, दैट फ्रीडम कि अभी थोड़ा सा, यू नो, विद द रन्स, so you know, even in the second goal against Chelsea, the way he scored out of nowhere, मतलब रन लेके बंदा कहाँ से कहाँ आ गया, you know, he was anticipating that कि बॉल मेरे पास आएगी। पता नहीं यार, मुझे आई एम स्टिल सेइंग दैट आई एम अंडरवेल्म्ड, जस्ट बेसिकली वही है, लाइक वाचिंग अ लॉट ऑफ बुंडेसलीगा, मे बी यार यू कैन प्रॉब्ली गिव बेनिफिट डाउट कि वो आया है, he has kind of picked up, वो हो सकता है कैटलिस्ट। That's why I said, you know, under Erik Ten Hag, the most optimistic I am about 2-3 players is Donny, Sancho and Rashford. यार लेट मी सी यार, फॉरवर्ड्स का बताइए सब। बाय द वे यार हार्दिक, मैंने देखा आपका कमेंट, यार ब्रूनो आना चाहिए यार मिडफील्डर्स में, व्हेन इट कम्स टू, वी आर नॉट टॉकिंग एंटायर प्रीमियर लीग 11 यहाँ पर, तब डिबेट फिर भी हो सकता था, मे बी, आई नो वहां पर भी अंशुमन माइट डिसएग्री, लेकिन आई फील दैट वहां पर, लेकिन कम ऑन, ब्रूनो हैज टू बी यार, मतलब ही इज द फर्स्ट नेम इन द कंबाइंड 11 व्हेन यू आर टॉकिंग आर्सेनल मैनचेस्टर यूनाइटेड। VDP of Bruno in Ten Hag era is mine, as in that's something that we discussed already. Sancho और Elanga is left wing. अच्छा यार Rashford नहीं यार, Rashford तो नहीं। बिल्कुल नहीं। I don't think even Elanga, you know, I don't think, you know, we can switch wings, we can give Odegaard a try, and Odegaard is probably, I think probably Odegaard, I would still say because of consistency की बात कर रहे हैं ना जहाँ पर, yeah, exactly, like I will go with Odegaard as well over Sancho and ESR. ESR बोलो क्यों मैं बोला था, क्योंकि he is like Chelsea's nemesis for whatever reason। तो मुझे वही याद आता है पहले ESR का, फॉर हमने एक्चुअली उसका करियर बनाया, हमने उसको प्लेयर बनाया प्रॉपर। लेकिन हाँ, ब्रिलियंट, आप देख ही रहे हो यहाँ पर। बाय द वे, होप एवरीवन हैज लाइक द स्ट्रीम। Do check out the United Road. We'll be, you know, live tomorrow on Watch Along as well, और हम will be live on Almighty Blues Cricket. Well, let's see, again मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, I'll be posting it, देखते क्या रिएक्शन आता है सोशल मीडिया में। And yes, do follow us on social media भाई, काफी पोस्ट आते हैं, all our updates come there, so that we are able to build that community further, have more discussion, और any feedback we're always open to, but this team looks good. कैप्टन कौन भाई? रोनाल्डो? इस टीम में तो एक ही है, चलो रोनाल्डो को कैप्टन डाल देते हैं यार। मार्टिनेली वाजंट अ बैड शॉट, लेकिन नहीं, वो कंसिस्टेंट पूरा सीजन में नहीं किया, कंसिस्टेंसी नहीं है उसकी। एग्जैक्टली। तो चलो अच्छा, इट वाज गुड फन, लॉट ऑफ डिस्कशन आज, मतलब मजा आया, काफी डिस्कशन किया अबाउट यूनाइटेड, चेल्सी, लिवरपूल पार्टली, वी स्पोक अबाउट सेरी A, एंड ऑफ कोर्स, यू नो, सो कॉल्ड प्रीमियर लीग हॉल ऑफ फेम, and you know, we did a combined 11. So hopefully people who miss it do rewatch it, and of course, you know, press the like button, check out United Road, check out Almighty Blues Cricket, and we'll be back very soon. Any last word, Anshuman? कि first of all guys, subscribe कर दो चैनल भैया का। obviously if you are here not subscribed, stream like नहीं किया तो वो चीज सबसे पहले कर दो, because you know, when someone is trying to put out content for you, like, subscribe, you know, that what defines their work. You know, I'm not saying you guys will be present for every stream, but when you switch that notification bell on, you know, you have that in mind that all right, you got that notification, you can watch it later. So he's doing a lot of hard work, he's out here, you know, every day, so show some love, and I will hopefully see him tomorrow at my watch along. Yes, for sure मिलते हैं, अच्छा रहेगा, मतलब for me as a neutral, I always love watch along neutral. Yeah, that's why, you know, as a neutral दूसरे के गेम्स देखना ना, it's much more fun. Like I watched Real Madrid's game without any, you know, without any stress. Obviously जब चेल्सी ने 3 मार दिया तो मेरे को स्ट्रेस आ गया था, मैंने बोला भाई क्या हो रहा है ये। Let's not go there. Yeah, I think again lot of votes आए यहाँ पर, सब लोग आर्सेनल मैनचेस्टर यूनाइटेड गेम को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं इस वीकेंड, इंटरेस्टिंग। एंड अगेन यार संडे को देखना, हम अगेन विल बी डूइंग अ वॉच अलोंग ऑन संडे एज वेल, होपफुली ऑन ऑलमाइटी ब्लूज FC या ड्रॉप बाबा, लाइक यू नो, फॉर चेल्सीज गेम। लेकिन सर्टेनली दैट विल बी ग्रेट। टाइमिंग फॉर द स्ट्रीम यही बता दिया करो, इट्स इजियर। सो एक स्ट्रीम जो एब्सोल्युटली प्लान्ड है वो है मंडे की स्ट्रीम। वीकेंड में वील डू इम्प्रॉम्प्टू स्ट्रीम, बिकॉज हम जानते हैं आई डू वीकेंड विद अंक, यू नो, काइंड ऑफ
question hour session, call in session. लेकिन Monday की stream planned है, that is Monday at 7 p.m. same time. So do join. That's going to be a brilliant stream. Champions League semi-final preview and lots more as well based on the weekend. लेकिन weekend में भी हम वापस से live आएंगे. Hopefully दोपहर के समय India में. Absolutely. Reschedule stream every evening by 7 p.m. as Ramadan is going on. Okay, fine, fair enough. I kind of mix it up, Sayat, but again, it depends on everyone. But again, yeah, I'm hoping you can kind of adjust. But we'll do kind of both the things, right? Let's see. Yes, and wish you all the best for the game to United. But I'm just hoping exciting ho last top 4 or last battle for the title. But Chelsea जीतनी चाहिए भाई. Come on, Chelsea. We just want to come back. That's a good question at this point of time. Where that's why they are also in their minds are. No, London derbies. Imagine if we lose back to back. That'll be like total chaos. We can't. And knowing Chelsea, हम जा सकते from that to this. We have done that in the past. That's the only reason. But again, thanks a lot by Anshuman and everyone watching as well. Shout out to the mods as well. And I am live at 9 p.m. on Drog Baba as well. So do join everyone. Shout out to Drog Baba and of course United Road. Till next time, take care and come on, up the Chelsea. Hopefully United can get some